would be like you have to watch videos first because basically ये revision classes होगा. Today we'll be starting with AMH and we'll be completing AMH. I have few questions for you all from the II paper, so we'll be taking up after we are done with the theory. फिर follow up जो भी अपना schedule I have shared उसके बाद I'll be taking up portfolio theory. तो कल जैसे what I'm planning we'll be doing portfolio theory का theory portion पूरा. So what I want you guys to do is share your doubts with me. कोई भी questions if you're finding it difficult, II के paper में, IFoA के paper में, anything from the compiler as well, so that I can include your doubts in my explanations. So if I'm explaining a topic, so if that question is related to that topic, I'll include that question in the topic itself. Otherwise, I'll, pick the questions myself. But it's better that way कि आप लोग के doubts solve हो. And so कल portfolio theory का doubts करके theory करके the next class we'll be taking up one question, Excel based question, CM2 paper B for portfolio theory, and some part of the time for that class I'll be reserving for your doubts. So keep collecting your doubts as and when you are revising, and जो भी schedule है, make sure you are up to that schedule. I know I also missed a class last Sunday, so here and there थोड़ा होगा, but whatever we are following in the class, make sure you are up to date. जैसे अगर आज EMH कर रहे हैं, तो make sure you go through all the questions of EMH compiler, try to solve the PYQs. You have 1 week. आज EMH कर रहे हैं, कल portfolio theory start करेंगे, तो you have 1 week to cover 2 topics, EMH and portfolio theory. क्योंकि next week तक portfolio theory continuation पे रहेगा. तो if you guys follow that way, आपका भी syllabus around March, April, mid-April cover हो जाएगा. So it's better that way. So let's start. So what is EMH? EMH is efficient market hypothesis. So what is the background of this chapter? Late, in the early 1900s, there were many theories going on regarding stock market, that how can you make money in stock market. So different people had different theories. So among the most popular theory, or what people came into conclusion the most, was EMH, efficient market hypothesis, the meaning of which is that whatever your prices are, security prices are, or your stock prices are, they incorporate the information which is available in the market. So we have 3 types of form of markets under EMH. What are the 3 types? Anyone? 3 forms of market. Three forms of market. The first form is weak. The second is semi-strong. And the third is strong. This is the most important part of this chapter. The majority of the questions will be focused on the 3 forms of market. You will be presented with let's say a situation, and you have to identify whether that market is weak form of market, semi-strong market, or strong market. Now, what is weak form of market? What are the identifications of the weak form of market? When we say कि एक market weak form पे अपने, तो you cannot perform the chart analysis. जो भी chart analysis करते हैं अपने, let's say अब आप एक stock market का chart देख रहे हो कि it was rising, then there was a sudden dip,
फिर से राइज किया, फिर से सडन डिप, तो यू सी देयर इज अ पैटर्न विच इज फॉलोइंग, तो आप अज्यूम करते हो कि ठीक है प्रीवियस ऐसा होते आया है, इन फ्यूचर द सेम पैटर्न विल बी फॉलोइंग. सो दिस इज चार्ट एनालिसिस. So under weak form of market, chart analysis won't help you. Chart analysis, or in other terms, it is also called technical analysis. So if there is a person who is doing technical analysis, basically analyzing the charts of the stock present in the market, and if there's a person who is randomly selecting the stocks, randomly just picking out 5 stocks out of 10 stocks and investing in those stocks, उन दोनों के रिटर्न्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा इफ द मार्केट इज वीक फॉर्म. बिकॉज वट एवर ये चार्ट एनालिसिस से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, ये डिप्स हो रहा है, देन देयर इज अ सर्टेन स्पाइक इन द प्राइसेस, वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है इन द प्राइस, इन द सिक्योरिटी प्राइस ऑफ योर स्टॉक. इज दिस क्लियर? सो बेसिकली जो भी प्राइस हिस्ट्री है of your investment, that is already there or already incorporated in the market price. तो आप प्रीवियस आप हिस्ट्री को स्टडी करके यू कांट जनरेट greater returns. Any doubts? Yes, no? Need some participation. No, ma'am. Okay. Then you have semi-strong form of market. तो वीक फॉर्म ऑफ मार्केट में क्या हुआ था? ऑल द पास्ट इंफॉर्मेशन वाज प्रेजेंट इन योर मार्केट प्राइस. आपका जो भी मार्केट प्राइस आप चार्ट एनालिसिस करके यू वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट, द रिटर्न्स वुड बी डिफरेंशिएटेड. सेमी स्ट्रॉन्ग, इफ योर मार्केट इज सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट, तब क्या होता है? जितना भी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, इन योर वीक फॉर्म इट वाज पास्ट इंफॉर्मेशन, इसमें क्या आ रहा है? पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन. नाउ व्हाट इज पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन? ऑल द बैलेंस शीट्स, द पीएनएल्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, फिर जो भी रेशियो एनालिसिस दे सबमिट. उसके बियॉन्ड, इफ द मैनेजर और द सीएफओ सीईओज, if they are holding any press conference, उस press conference का readings, all these are the publicly available information. तो सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट बोलता है that these publicly available information, the balance sheet, P&L, ratio analysis, इसको if what happens is someone like, if you know how to read a balance sheet, how to read a P&L, कि ठीक है अभी last quarter में they had this much assets, this much liabilities, अभी assets are decreasing, liabilities बढ़ रहा है, why liabilities बढ़ रहा है? क्योंकि loss कम, लॉस ज्यादा आ रहा है, सो मे बी दे आर ट्राइंग टू ऑफसेट दीज लॉसेस बाय टेकिंग सम मनी फ्रॉम पीपल. तो अगर आप ये टाइप का एनालिसिस इफ समवन इज डूइंग, व्हाट इट इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस. आप जो भी कंपनी का फंडामेंटल्स है, उसका द फर्म बेस ऑफ द कंपनी, यू आर ट्राइंग टू एनालाइज दैट. इफ द मार्केट इज सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट, any type of fundamental analysis won't reap you greater benefits. आप बैलेंस शीट स्टडी कर लो, आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट स्टडी कर लो, आप रेशियो एनालिसिस देख लो, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज निकाल लो, उससे आपको कोई भी मेजर रिटर्न्स नहीं मिलेगा इफ योर मार्केट इज सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट, बिकॉज इट इज बिलीव्ड कि जितना भी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है दैट इज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन द प्राइस ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट. तो वीक फॉर्म में क्या होता है? आपका पास्ट इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेटेड है. सेमी स्ट्रॉन्ग बोल रहा है कि करंट डेट पे जितना भी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है दैट इज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड. नाउ देयर इज अ कैच ओवर हियर.
कि what do you consider as publicly available information? डिफरेंट एक्सचेंजेस होता है, जैसे यू हैव इंडिया में यू हैव सेबी, यूएस में यू विल हैव समथिंग एल्स, यूके में यू विल हैव समथिंग एल्स. सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होता है. इफ अ कंपनी वांट्स टू गो पब्लिक, उसको आईपीओ लेके आना है, तो हर एक्सचेंज का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू डिस्क्लोज दिस थिंग. maybe India में you are expected to disclose 5 amount of things, and maybe US में they want कि आप 2 extra चीज और उनको सबमिट करो. दे वांट 2 एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स. सो जितना डिस्क्लोजर्स होगा उतना इंफॉर्मेशन ज्यादा पब्लिकली अवेलेबल है. आर यू विथ मी? जितना आप डिस्क्लोजर हो रहा है एक एक्सचेंज में, जितना कंपनी अपना रिपोर्ट डिस्क्लोज कर रहा है, उतना ज्यादा पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन. सो सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट के थ्योरी में क्या आता है, हाउ डू यू रियली डिफाइन पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन? क्योंकि डिफरेंट एक्सचेंजेस, उनका अलग अलग लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स होता है. एक बात ये हुआ. दूसरा बात हुआ, even when the information is publicly available, okay, you have your balance sheets available, P&L available, ratio analysis available. कोई भी exchanges में कोई भी different types of requirement नहीं है. Everyone has standardized the same level of requirement. सबने same level of requirement का बोल दिया है. If even after that there can be 2 persons, A and B, A को fundamentally analyze करना आता है all these statements and everything. Now B doesn't know how to do it. So A has a leverage of doing it. A has a leverage कि वो ये सब करके greater returns reap कर सकता है. If not एक group of people में not everyone knows how to fundamentally analyze the statements which are available, तो उनके पास एक greater advantage हुआ. क्योंकि अगर सब नहीं कर पा रहे हैं तो आपके जो सिक्योरिटी, आपका जो प्राइस है, उस पे वो इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाया. थर्ड पॉइंट इज देयर इज अ कॉस्ट टू अटेन दीज पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन. में बहुत कभी ऐसा हो सकता है कि यू वांट कि आप एक कंपनी का कोई रिपोर्ट लो, बट दैट इज अ पेड रिपोर्ट. यू हैव टू पे इन ऑर्डर टू गेट दैट रिपोर्ट. सो देयर इज अ कॉस्ट एज वेल. Cost which can include your time and your money. तो एक ये आता है, if जो आप कॉस्ट बेयर कर रहे हो इन ऑर्डर टू अटेन दिस इंफॉर्मेशन, एंड वो मनी स्पेंड करने के बाद यू आर इन्वेस्टिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एज वेल, ताकि आप उसको एनालाइज कर सकते हो whether this cost is greater than your benefits or not. अगर कॉस्ट आपको जो बेनिफिट्स, जो रिटर्न मिल रहा है उससे ज्यादा है, तो it doesn't even make sense to do the fundamental analysis. इससे better I'll not be investing, I'll simply invest in a FD maybe. So your cost also has to be less than your benefits in order for you to do the fundamental analysis. तो semi strong में हम लोग क्या क्या पढ़े? First is all the publicly available information is incorporated. Any fundamental analysis will not lead you to excess returns. Then you have your exchanges, disclosure levels. What is the second point, guys? Skills. And the third is cost. Is this clear? Yes, ma'am. Then you have the strong form of market. Now what the strong form of market tells, अगर हम लोग बोलते हैं कि एक मार्केट स्ट्रॉन्ग फॉर्म पे है, सेमी स्ट्रॉन्ग में क्या था? सेमी स्ट्रॉन्ग में इट वाज पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन. वीक पे क्या था? इट वाज योर पास्ट इंफॉर्मेशन. स्ट्रॉन्ग में क्या बोलता है कि योर प्राइस इनकॉर्पोरेट्स द पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन प्लस इंफॉर्मेशन टू इनसाइडर्स.
What is information to insiders? कोई merger हो रहा है, कोई acquisition हो रहा है, or if the company is bringing an IPO, or if the company is, let's say, selling off its investments, or the CEO of the company is changing or resigning, whatever. तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है, दीज आर इनसाइडर इंफॉर्मेशन. इफ मर्जर हो रहा है, इफ द ये क्यों क्या होता है, डू यू गाइस नो अबाउट इनसाइडर ट्रेडिंग व्हिच इज बैन? इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? द एम्प्लॉयज और जो भी एक वेल नोन पोजिशन पे है ऑफ दैट कंपनी, दे आर नॉट अलाउड टू ट्रेड फॉर द स्टॉक ऑफ दैट कंपनी. क्यों? क्योंकि क्या होता है, उनके पास सारा इंफॉर्मेशन होता है. अगर एक एम्प्लॉय है हु इज एट अ गुड पोजिशन इन दैट कंपनी, उसको पता है कि मर्जर होने वाला है, एक्विजिशन होने वाला है, एंड दैट एम्प्लॉय नोज कि अगर मर्जर हुआ, let's say employee board of directors, they are also banned from trading the stock of that company. और अगर कोई मर्जर हो रहा है, लेट्स से वो कंपनी और एक दूसरा कंपनी, दे आर कमिंग टुगेदर एंड अपना सारा ऑपरेशंस दे विल बी परफॉर्मिंग टुगेदर. तो उनको पता है कि अगर ये मर्जर हुआ, ये एक्विजिशन हुआ, वेदर इट विल लीड टू पॉजिटिव रिजल्ट्स और नेगेटिव रिजल्ट्स, वो लोग का ओपिनियन है, बट वो लोग के पास सारा इंफॉर्मेशन है. सो दे कैन फॉर्म एन ओपिनियन बेस्ड ऑन वट एवर इंफॉर्मेशन दे हैव. तो उनके पास कंपेयर टू कॉमन पब्लिक एक एज है, एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक ज्यादा इंफॉर्मेशन है व्हेन कंपेयर टू कॉमन पब्लिक. तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट बोलता है कि फिजिकली अवेलेबल, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन तो जो है वो है, इसके बियॉन्ड इंफॉर्मेशन टू इनसाइडर्स, जो सिर्फ इनसाइडर्स को पता होता है. कंपनी के जो क्लोज नेट पीपल है या कंपनी के जो भी हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज है, उनको पता होता है. वो इंफॉर्मेशन भी आपके प्राइस पे इनकॉर्पोरेटेड है, विच इज अ लिटिल थियोरेटिकल इन दैट सेंस, क्योंकि ये इन प्रैक्टिकलिटी में ये नहीं होता है कि मर्जर एक्विजिशन ये सब के बारे में कॉमन पब्लिक को पता हो, क्योंकि ये जब से आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जब इट गेट्स इनटू द न्यूज एंड एवरीथिंग, यू विल गेट टू नो. बट उस पॉइंट तक ऑलरेडी वो स्टॉक पे बहुत इफेक्ट आ चुका होता है. तो क्या बोलते हैं कि मर्जर एक्विजिशन, आईपीओ, इफ द कंपनी सेलिंग ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, ये कोई भी चेंज हो रहा हो, वो चेंज का भी प्राइस आपके सिक्योरिटी पे इनकॉर्पोरेटेड है. नाउ इफ दैट इज रियली द थिंग, देन व्हाई इज इनसाइडर ट्रेडिंग बैन? अगर ऑलरेडी आपके प्राइस, आपका अब क्या बोलते हैं कि ऑलरेडी अगर आपके प्राइस में ये इनकॉर्पोरेटेड है, ये जो भी इंफॉर्मेशन इनसाइडर्स के पास अवेलेबल है वो भी इनकॉर्पोरेटेड है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग बैंड क्यों? बिकॉज दैट इज नॉट रियली द केस. ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है. ये सारा इंफॉर्मेशन इन रियलिटी कभी भी इनकॉर्पोरेटेड नहीं होता है in the price of the security. That is why insider trading is banned, ताकि जिनके पास भी ये information हो, वो common public से एक advantage पे नहीं हो and उनसे ज्यादा returns नहीं कमा पाए, एक unfair advantage नहीं हो उसके पास. Now you can have a different point of view on that also, कि अगर insider trading banned नहीं होता, let's say some group of people who already had that information, they were allowed to trade on that information. तो अगर वो लोग ट्रेड कर पाते तो सिक्योरिटी प्राइसेस में वो इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट हो जाता, जो भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो सिक्योरिटी प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाता. अचानक से यू वोंट सी कि अच्छा एक न्यूज आया एंड अचानक से वो स्टॉक प्राइस ऐसे भागा. व्हाट वुड हैपन? ग्राफ कैसे हो जाएगा कि स्टॉक का प्राइस लेट्स से इधर पे था, वो धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, नॉट कि एक पॉइंट पे अचानक से बढ़ने लग गया. तो इफ द इनसाइडर पब्लिक वाज अलाउड टू ट्रेड, तो आपका जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट है, देयर वाज अ ग्रेटर चांस कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट वुड हैव एग्जिस्टेड देन द केस व्हिच इज राइट नाउ व्हेन इनसाइडर ट्रेडिंग इज बैंड. क्लियर? Yes, no? Yes, ma'am.